अब जबकि जुपिटर आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऊपर देखें तो जुपिटर होराइजन से ऊपर आ चुका है और अब मैं इसको कैप्चर करने वाला हूँ। मेरे पिछले लाइव में आवाज़ कुछ आई नहीं थी उसमें, मुझे उम्मीद है कि इस बार आवाज़ आ रही होगी। तो अगर आप देखें तो जुपिटर इस तरीके से दिखता है लाइव आंखों से। ये भी कैप्चर हो रहा है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। और अगर मैं इसका थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाऊँ तो हमें शायद इसके मून भी दिखेंगे। आप देख सकते हैं 3 मून अभी यहाँ पे इसी फ्रेम में दिख रहे हैं, चौथा यहाँ पे छोटा सा है। ये पता नहीं क्यों मूव कर रहा है। तो फिर से सेंटर कर दूंगा बस इस तरीके से, और अभी इसको ट्रैक कर रहा है। आप देख सकते हैं जुपिटर अभी अभी ऊपर से निकला, अभी अभी से निकला है। तो अभी एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन भी काफ़ी है, बट लेकिन ये भी कैप्चर हो रहा है। अच्छा, इसको सेंटर करने के लिए मैंने एक आई पीस यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मेरा टेलीस्कोप है GSO-RC6। ये है प्लेनेटरी कैमरा एस्ट कैंपेन का 224 MC, और ये है डीप स्काई कैमरा जो कि मैंने लगाया है अपने गाइड स्कोप में, जो कि अभी फाइंडर स्कोप का काम कर रहा है। ये है एस्ट कैंपेन का 533 MC, एक डीप स्काई कैमरा है। और ये मेरा माउंट है एक्सप्लो साइंटिफिक का एक्सॉस्टो PMC8 GT। यहाँ पे पावर बैंक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जुपिटर कैप्चर हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफोटोग्राफी में, और अंतरिक्ष को जानने में कि नंगी आंखों से कैसा दिखता है, या फिर फ़ोटो खींच के अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसे लाइव लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, जो भी मैंने आज तक कैप्चर किया है वो सब, और उसकी इमेजेस आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम में पहाड़ी एस्ट्रो के नाम से। हेलो एस्ट्रो प्लैनेट। अभी जुपिटर कैप्चर हो रहा है, काफ़ी अच्छी फ्रेमिंग हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको भी रिकॉर्ड कर ही लूँ। कैप्चर में जाके शॉप कैप में स्टार्ट कैप्चर करूँगा, और यहाँ से मैं जुपिटर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं जुपिटर को कैप्चर कर रहा हूँ। अनलिमिटेड फ्रेम्स रखूँगा और उसको स्टार्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लैरिटी है, उतना क्लियर नहीं है जितना कि अपना सैटर्न था, क्योंकि वो एकदम आसमान में यहाँ पे ऊपर था, अभी भी है। लेकिन जुपिटर अभी अभी राइज हुआ है, आप देख सकते हैं लगभग 20-25 डिग्री ऊपर है होराइजन से। इस वजह से थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन है अभी। आप देख सकते हैं जैसी हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की, हाई फोकल लेंथ पे ये समस्या रहती है, थोड़ी सी हवा से ही पूरा स्कोप हिलता है। देखिए अब यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो उनके जो झोंके आ रहे होंगे हवा के, उससे ये फ्रेम से एकदम हट जा रहा है। ये देखिए आप सेंटर में था, काफ़ी इधर आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले वो इधर को गया था हवा से। तो ये इस तरीके से भी कैप्चर हो रहा है। 3000 फ्रेम्स में इसमें कैप्चर कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे देखें, today I'm also going live, but due to clouds I think it is not possible today. Yeah, there are clouds at some places, but fortunately we have clear skies here. Can you hear me, Astroplanet? Can you hear my voice when I went live?
Like an hour back, when I was capturing Saturn, I realized later on that my voice was not reaching, the video was not having my voice. Okay, thank you so much for confirming that, Astro Planet. So in order to put it into the center, I will just move it from here and see. No, not here. I will move it to south a bit, then up east, up like that, a bit north. Oh, but I should not have done this because I'm already recording, so I will stop the recording, then center it and then capture it again. I will put it into the center. Up, looks good here. Move it a bit towards west so that it's in the center. So now it's in the center. Now I will start recording it. Start capture. Jupiter is fine, and I will start recording this. Yeah, so the atmospheric depression has also reduced a bit, which is good for me. You can see the frames here. It's getting recorded. Lot of light pollution for me here. You can see this 6 or 7 street lights that I have, and a lot of pollution from the local town. Mr. Astro Space, hello, how are you? Astro Buddy, hello. Capturing Jupiter, yes, I'm today capturing Jupiter. I was live 1 hour back when I was capturing Saturn, which is now almost here. But unfortunately, that live, I don't think you guys could hear me in that video because for some reasons my audio was not functional. I later on realized that the video was not having any audio. But fortunately, Astro Planet has confirmed that he can hear me. तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है भाई यहाँ पे. ठंड में बाहर रहना बड़ा मुश्किल है. अभी 10 बज के 8 मिनट हो रहे हैं. बैटरी भी ज़्यादा नहीं बची है लैपटॉप में. I just wanted to go live today so that I can just interact with you guys. That's what I'm thinking moving forward, that I will go live every now and then so that we all stay connected and we can share our thoughts about this topic. Yep. When I was doing Saturn, I did a bit of visual as well today. I showed my father was here today, so I showed my father how Saturn looks. I showed my daughter Saturn. It's her favorite planet. My son as well. So yeah, after that I just captured a few frames. I thought 7,000 frames or something like that for Saturn, and now I am basically capturing Jupiter. I was also planning to set up my phone with the phone holder on the telescope so that I can go live with you guys, but unfortunately the phone holder that I have, the adapter that I have for the telescope, it does not work well with the, it did not, because the where you have to slide that eyepiece, it's very small. So my bigger eyepiece that have a, like, bigger field of view, better eye relief, it just did not fit that. So that's why I did not put my basically phone on the telescope directly. So now I'm basically capturing these frames for Jupiter, and there's a lot of atmospheric depression right now. You can see a lot of distortion in the shape of Jupiter.
I had set up everything. I had brought my tripod as well so that I can show you with my mobile phone, but unfortunately ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि फ़ोन से मैं उसको सेंटर ही नहीं कर पाया। और जैसे कि मैंने बताया, अडाप्टर जो मेरा फ़ोन का अडाप्टर है जिसको कि मैं टेलीस्कोप में लगा सकता हूँ, उसका जो होल है वो बहुत छोटा है, और मेरा जो आई पीस है, जो अच्छा वाला आई पीस है जिसका 50 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, वो उसमें आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लें। You can ask me any questions if you guys have. I can answer them. I was planning to do deep sky as well today, but uh, I was just not feeling like I should go for the deep sky today because थोड़ा tired था इसलिए। I have Samsung Mobile Mo 2 phone, and in this phone camera there's not Pro mode, but I download Pro mode. Okay, which I can try to capture Comet E3 Atlas. It is unable to capture. Yeah, you can install external applications. They they allow you to take longer exposure images. So yeah, it's a good idea to have an external app on your phone if your phone does not have the pro mode. सर आपका स्काई लेवल क्या है? मेरा स्काई लेवल बॉटल 4, बट एक जो एप्लीकेशन है क्या नाम है उसका, लाइट पोल्यूशन मैप जो है वो 4, बॉटल 4 दिखाता है। एक और ऐप है वो 5 दिखाता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं अभी बता रहा था, यहाँ पे लाइट पोल्यूशन देखो कितना भयंकर है। इतना भयंकर है कि मुझे किसी भी लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं है अपनी वीडियो को बनाने के लिए। टेलीस्कोप की एक एक पुर्जे आप चमकते हुए देख सकते हो, इतना ज़्यादा लाइट पोल्यूशन है। मैं ये कहूँगा कि शायद बॉटल 6.5 होगा शायद, जिस हिसाब से यहाँ पे लाइट पोल्यूशन है। आसमान में अगर मैं तारों की बात करूँ, अगर आपको जज करना है, तो आसमान में मैं अभी मुश्किल से 20 तारे देख सकता हूँ, 20 स्टार्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लाइट पोल्यूशन है। अभी लाइट गई थी थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी ब्राइट हो गया था, तो तकरीबन 50-100 स्टार्स तो दिख रहे थे। What are they? Astroplanet, what do you mean by what are they? You basically want to know what is the sky level? Sky level. What Mr. Astrospace is asking is the bottle scale. So the bottle scale depend upon the light pollution in your area. It's basically a scale to measure light pollution in your uh, areas. So you can search for light pollution map on Google, and it will take you to the website that will show you in your location what's the bottle scale for you, what's the sky level for you. Then there is other sky level thing as well, if I am getting right, Mr. Astrospace. दैट्स बेसिकली स्काई क्वालिटी होता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ स्काई क्वालिटी क्या है। जब तक आपके पास स्काई क्वालिटी मीटर नहीं है, तब तक आप जज नहीं कर सकते हो क्या है स्काई क्वालिटी, बट यहाँ पे ठीक ठाक ही रहता है। आसमान में थोड़ी हल्की हल्की धुंध अब शुरू होने लगी है ठंड की वजह से। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐप। या सो वन इज one is a web-based software that is light pollution map, and one I have installed on my phone. I have used it just once or twice, but I do not remember exactly the name, what that name is. So let me, if I can share. No, I cannot share the screen. So guys, we have to make sure that I reach 1,000 subscribers so that I can do these live, like horizontal lives as well, and I can screen share as well on YouTube, because YouTube only allows that after 1,000 subscribers. So Astro Bengali, hi Astro Bengali, how are you? My polar alignment was spot on today, but when when my kids came here and this did the visual astronomy, they kind of uh, moved the mount a bit. I don't know. तब से थोड़ा सा पोलर अलाइनमेंट थोड़ा सा आउट है इसका, इसलिए थोड़ा थोड़ा देर में
ये साइड से हट रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा पोलर लाइन हुआ है आज, क्योंकि जिस हिसाब से ये फील्ड ऑफ व्यू है, आप इसको कह सकते हैं कि ये है आपका 1370 मल्टीप्लाइड बाई 2, इतना ज़्यादा फोकल लेंथ है, और साथ में कैमरा भी बहुत छोटा है, 1370 बाई 700 समथिंग पिक्सल है, तो बहुत छोटा कैमरा है, प्लानिटरी कैमरा, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर मूव हो रहा है टारगेट, बट स्टिल इट्स वेरी गुड polar alignment today for me. I'm good, Astro Bengali, I'm good. I hope you are good. You are enjoying your astronomy. You guys are all enjoying your astronomy, your skies. I'm not sure how many of you have clear skies right now, but I at least have clear skies. As I was saying that I was planning a deep sky target today, the Phantom Galaxy, but I was just a bit of tired today, so I thought that let's do live today so that I can meet you all, and I will capture that galaxy some other day. And I'm also thinking that because the Phantom Galaxy is very face on towards the Earth, that's why it's named Phantom Galaxy. You can very hardly see it. It's very difficult target as well. So I was thinking that instead of capturing it from here, from so much of light pollution, why not capture it from some other place when I go astro camping, or when I go to my village where there's darker skies. The Phantom Galaxy will be a very great target to capture from there. So that's what my plan is. So I just dropped today's plan of capturing the Phantom Galaxy, and I stuck to capture Jupiter today, do some planetary. I had like almost zeroed into Venus today, but as soon as I zeroed into Venus, I mean, by that time it just set. So I was not able to capture Venus today again. Fine, how are you? Oh, is that Mars? No, this is not Mars. This is, you can see what is this? This is Jupiter. So today there are, if I talk about the frame, there are almost 3 moons. I'm also not able to see them right now, but when I will process them, they will definitely appear. Oh my god, I can see I have already captured 16,000 frames. I didn't want to go to that extent, so I will just stop it right now because it will consume a lot of memory from my mini PC that's installed over here. You can see this is the mini PC here. That's my power bank there, and this is my entire scope. This is an extension that I use. It's 1 into 2, 1 into 3 car charger socket, just for extension purpose. Okay, so I can see now the atmospheric depression has now kind of reduced as the target is moving towards I mean, heading towards the meridian, or like, upward. So yeah, you can see it's there. I think this way of going live is much better than how I was going last time, when I was sitting inside my room. This way, I mean, I can handle my scope from here, and the live can be shorter in duration rather than going for 2 hours. We can have it for like 20-30 minutes, which is kind of enough. Okay. Let me just recenter it from here. I always forget where I was supposed to move it. Let me just center it. Okay, I think south. Yep. This downside of remoting into your PC if there is a lag. So
you can lose your target when you are slewing it, because you never know how much you have pressed it. So that's the downside. Put it almost on the center. uh, yep, that's it's like जैसे कि किसी साइकिल में ब्रेक नहीं होता है, ये बस ऐसे ही भाग रहा है. But now finally it's almost in the center, so which is good. I captured Jupiter too, but my image was not that good. No worries, maybe your optics were not that great. What was the scope that you used for capturing Jupiter? I'm curious to know that. So because this is an RC, so RC are great telescopes. The optics is like top notch. You all know that. Even the, what do we call it? Even the Hubble Space Telescope is a RC. So RC, the optics are always great. So that's why the results are kind of good with RC. Okay, 760 easy. Yeah, that's why. Because actually this is a very expensive hobby, as you all know. So the expensive the telescope, the expensive the optics, the better the images comes out. So yeah, no worries, but you will definitely get there for sure. Astro Bengali definitely will get there. So yeah, so like you guys, I mean, you have started with all these telescopes. We didn't even have a chance to touch these kind of telescopes because we did not have money. So we, when we earned and all those things, so after that we were at least able to like purchase the scopes and all. So it's a, you have to basically gradually progress in this hobby, and it's a beautiful hobby to have. So yeah, there are a lot of dogs these days on the streets. I mean, it's, you cannot just go out. That's my car there, Jimny, that I take with me for astro camping. I have the bedding set up inside, everything. So because now it's like the winter is coming, so I am planning to go astro camping as well after Diwali. In fact, I was planning for going astro camping today, but yeah, as I said, I was kind of tired, so I just dropped that idea. Yeah, your telescope is very small. That's why Astro Bengali, because for planets you always need a bigger aperture. If the aperture is big, your image will be crisp. So, okay, guys, so we are already 20. We have already been live for 23 minutes. So I will end this live in exactly around 30 minutes. If you guys have any questions, you can just ask me. If you have any questions, you can just maybe, if you guys know that I have a WhatsApp group as well where we discuss all these things. You can join the group as well. There is a, I'm also on Instagram, so you can ask me on Instagram. On Instagram, my ID is Pahadi Astro, PAHADI underscore Astro. So you can ask me questions there. You can ask me questions on YouTube as well, on in any video. And as I said, I also have a group, astrophotography group, on WhatsApp, so you can reach out to me on WhatsApp as well. I was also planning to capture um, Neptune and Uranus today, but they were kind of behind these houses, I think, at that point of time, so I just did not do that. And as I said, I'm finding it difficult right now to find the planetary targets. So though I have mounted my wide field camera on the on my guide scope, but I mean it's just not plate solving for some reasons. If I start, I will test it out next week maybe. So if I'm able to plate solve with this setup that I have, the guide scope and the camera, in that case I will be capturing Pluto. I'm sorry, yeah, Pluto. I can capture
Neptune and Uranus as well, and Mars as well. Mars I can find it because Mars is visible to naked eyes, just like Jupiter and Saturn. So I can center it by just slewing my telescope and watching it on Nina like that. सर प्लानिटरी फोटोज़ के लिए क्या करना चाहिए फॉर बिगिनर्स? प्लानिटरी फोटोज़ के आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या जानना चाहते हैं आप? प्लानिटरी फोटोज़ के लिए आपको पहले इमेजेस लेनी है, इमेजेस लेने के बाद आपको 2-3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका वीडियो भी ले सकते हैं, वीडियो से आप PIPP होता है एक सॉफ्टवेयर, उसमें आप उसको उसको सेंटर कर सकते हैं, वो जो वीडियो बनता है उसको सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन होता है उसका नाम है ऑटो स्टैकर्ड, उसमें स्टैक हो जाती है इमेजेस। उसके बाद आप फाइनल टच आप दे सकते हैं रजी स्टैक्स में, और ज़रूरत पड़े तो आप फोटोशॉप या फिर जिम का भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद में। अगर मैं आपकी बात को समझा हूँ नरेश स्वामी तो। Okay guys, less than 4 minutes left for this live to end. If you have questions you can ask me, or as I said, you can reach out to me on multiple platforms like Instagram. You can reach out to me on the WhatsApp group. You can ask me questions on any of my video as well. और टेलीस्कोप लेना चाहिए? प्लानिटरी के लिए डेफिनेटली आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे डीप स्काई टारगेट होते हैं जिसके लिए शायद आपको प्लानिटरी की टेलीस्कोप की ज़रूरत ना पड़े, बट प्लैनेट्स को कैप्चर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी टेलीस्कोप की। तो चलिए गाइस, 10:30 लगभग हो चुके हैं, 10:28 को लगभग 3 मिनट्स में मैं एंड करूँगा, सो दैट यू डू नॉट फील ऑकवर्ड कि मैंने कट कर दिया है। एनी सजेशंस? सो अगर आपको प्लानिटरी कैप्चर करना है, प्लैनेट्स कैप्चर करने हैं, तो सबसे बेस्ट इसके लिए होता है डॉप्सोनियन, बिकॉज आपको बहुत सस्ते में बहुत बड़ा अपर्चर मिल जाता है, और क्वालिटी भी जो होता है डॉप्सोनियन का बहुत अच्छा होता है। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रोग्रेस के भी चांसेस होते हैं। आप उसके साथ इक्वेटोरियल प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेटफॉर्म से आप डीप स्काई टारगेट्स को भी गाइड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपसे मिलता हूँ मैं अगले लाइव में। मैं कोशिश करूँगा शायद कल रात को मैं लाइव आऊँ, जब मैं कोई डीप स्काई टारगेट कैप्चर कर रहा हूँगा, तब आपसे मुलाकात होगी। आपसे मिलते हैं अगली बार।